मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ. First of all, we'll discuss about assets. ठीक है. So basically we know that there are two types of assets. One is known as non-current assets and the other one is known as current assets. We know non-current assets are those which usually have a life more than a year and they are less liquid, whereas current assets are highly liquid and they have a life less than a year. Non-current assets include motor vehicle, building, equipments. These are all non-current assets. Whereas current assets include inventories, trade receivables, cash in hand, cash at bank, prepaid expenses. Prepaid expenses mean some expenses which are paid in advance. Okay. After assets, and we also know that the nature of assets is debit. So if we increase assets, we'll record it on the debit side. If we decrease assets, we'll record it on the credit side. For example, if I say I had purchased a motor vehicle of $5,000 by cash, so the double entry is going to be motor vehicle debit, cash credit, because I have purchased a motor vehicle via cash. One asset is increasing and the other asset is decreasing. Motor vehicle is going to be debited, cash will be credited. After assets, the other one we have is liabilities. Liabilities are legal obligations. It is when we owe someone, when we have to pay money to someone. These are legal bindings, obligations, जो आपको पैसे देने होते हैं. Similarly, इस केस में भी ऐसे ही होता है that we have two types of liabilities. One is non-current liability and the other one is current liability. Non-current liabilities are those which are payable after 1 year. Current liabilities are those which we have to pay within a year. ठीक है. Non-current liabilities include long-term bank loan, whereas current liabilities include bank overdraft, uh, trade payables, owing expenses. These are all current liabilities. Liabilities की बेटा nature होती है credit. After liabilities, we have equity. What is equity? Equity, we also refer it as capital. Equity is what is invested into the business by the owner. So basically, capital can all be working capital or startup capital. Startup capital is the finance required to set up a business, whereas working capital is the finance required to pay for day-to-day running expenses of the business. The nature of equity, the nature of capital is credit. Capital increases, we will credit it. After equity, we have revenue. What is revenue? Revenue means sales, goods sold. Revenue Sir, can be could on you cash just basis. repeat for this? But equity is basically the capital, what we have invested into the business. Capital can be startup capital, जो आपको जो business को शुरू करने के लिए चाहिए होता है. And equity can also be working capital. Working capital is the finance required to pay for day-to-day running expenses of the business. Equity बोल दो, capital बोल दो, एक ही बात है. इसकी nature credit होती है. Revenue जो है उसको sales भी कहते हैं. Revenue की nature भी credit होती है. अब ये सब याद रखने के लिए हम एक phrase इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं और एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है. And in order to remember the nature of all of these classes of accounting, we can use the phrase after eating dinner, let's recall college cases. After eating dinner, let's recall college cases. We will use the first initial of all of these. For example, A, E, T. After से आएगा आपका asset, E से आएगा expenses. So asset and expenses have a debit nature. If asset increases, if we create expenses, we are going to debit it. L से आएगा liabilities, R से आएगा revenue, C से आएगा capital.
लाइबिलिटीज रेवेन्यू कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है. ठीक है, दिस इज जस्ट टू रिमेंबर दिस. ठीक है, दिस मेक्स सेंस. दिस इज जस्ट some we are just covering some basics of accounts. These are 5 classes in accounting: assets, liabilities, equity, revenue, and expenses. After this, we should know the accounting equation. Accounting equation is capital is equals to asset minus liabilities. Capital is equals to asset minus liabilities. This is the accounting equation. We can rewrite it as asset is equals to, we can even rewrite it as assets is equals to capital plus liabilities. Or we can even say liabilities is equals to assets minus capital. Asset minus capital. Okay. So we just got to know the basics of accounting. What is income statement? Income statement can also be referred as profit or loss statement. Profit or loss statement or loss statement. It tells us what is the profit or loss that the business has earned at the year end. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का हमें फॉर्मेट भी पता है. व्हाट्स द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट? सेल्स, and we are going to subtract sales return from sales in order to obtain the value of net sales. Once we have the value of net sales, we can calculate cost of goods sold. In order to calculate cost of goods sold, we use the formula opening inventory add purchases minus purchase return minus closing inventory equals to cost of goods sold. Then we can subtract sales and cost of goods sold in order to obtain the final value of gross profit. जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो उसके अंदर वी कैन ऐड नॉन ऑपरेशनल इनकम या फिर अदर इनकम. नॉन ऑपरेशनल इनकम इंक्लूड इनकम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस. For example, discount received, for example, commission received. These are all non-operational incomes. Once you have added all the non-operational income, you will get the final value of gross profit. Then we can subtract all the expenses from our gross profit in order to obtain profit for the year or the net profit. So over here we have the elements of income statement. अब क्या क्या elements होते हैं आपके वो देख लें. First of all we have revenue. Revenue is also known as sales. Sales बोले revenue बोले बात एक ही है. Expenses, cost of goods sold, gross profit, operating profit, income before taxes, net income, earning per share, EPS, depreciation, earning before interest, tax, depreciation, and amortization. What is revenue? Revenue is the amount of money a business takes during a reporting period. Revenue can be on cash basis, but it can also be on credit basis. What are expenses? Expenses are amount of money business spend during a reporting period. Cost of goods sold, cost of component parts of what it takes to make whatever it is a business sell. मतलब जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, जो उससे रिलेटेड आप कैरेज पे कर रहे हो, इन्वेंट्री से रिलेटेड वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा. Then when we subtract cost of goods sold from revenue, we can obtain gross profit. Operating income is gross profit minus operating expenses. Then we'll subtract interest and taxes in order to obtain net income. ठीक है. Depreciation, जी. amortization. Depreciation तो पता है आपको, it is reduction in the value of an asset over a specific time period.
Over here we have a draft, a sample of income statement. तो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है? इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है आपकी सेल्स से। फिर सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेट सेल्स पता चल जाता है। देन नेट सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड्स ऑल द cost which is related to component that the business sells. Then we'll subtract all the selling and operating expenses and the general expenses in order to get operating income या फिर आपका operating expenses। फिर जो भी अदर इनकम है जो मैंने अभी आपको बताई, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, वो सब हम ऐड करते हैं और बस फिर फाइनली आपके पास एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। Okay, let's move on. The importance of income statement. Income statement helps company leaders, analysts, investors understand the full picture of business operational results so they can determine its value and efficiency and ideally predict its future trajectory. Financial analysts analysis of an income statement can reveal the cost of goods sold are falling or sales have been improving while return on equity is rising. Income statements are also carefully reviewed when a business wants to cut spending or determine strategies for growth. ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपको प्रॉफिट बताता है, लॉस बताता है, उसके अंदर सेल्स भी इंक्लूडेड होती है। आप कंपैरिजन कर सकते हो पिछले 2 साल का इनकम स्टेटमेंट का इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया दैट द बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल या बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसी तरह एक्सपेंसेस का भी आप देख सकते हो, उसके हिसाब से फिर आप डिसीजन लेते हो कि यार एक्सपेंसेस आपको कट बैक करने चाहिए या आपको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर हो रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज लेते हो आप ग्रोथ के लिए कि हमें क्या बिजनेस को डिसीजन लेनी चाहिए। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। Okay, so over here we have a trial balance and we need to prepare income statement. BC, a sole trader, prepared the following trial balance from his accounts on 31st August 2022. BC एक sole trader है। Sole trader क्या होता है? Sole trader is a person who is the single owner of a business. He doesn't have any partner. He doesn't have any shareholder. He has complete control of the business. So over here we have purchases, we have sales, revenue, sales एक ही बात पे, sales return। अच्छा, for his account on 31st August 2022, यानी कि the year ends on 31st August 2022। तो ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 सितंबर 2021। ठीक है, तो 1 सितंबर 2021 को जो इन्वेंट्री है वो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और 31st August 2022 को जो है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे परचेजेस भी गिवन हैं, हमारे पास सेल्स भी हैं। वी हैव सेल्स रिटर्न, वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री, वी हैव नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट, वी हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीवेबल इज नॉन ऑपरेशनल इनकम, trade receivables, trade payables, discount allowed, discount received, insurance is an expense, repairs is an expense, salaries are expenses, rates are expenses, carriage invoice is the transportation cost paid by the business. Closing inventory was valued at $12,000। जिसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो $12,000 है। कमीशन रिसीव्ड ऑफ 800 वाज ओइंग एट 31st August 2022, यानी कि $800 और आपको कमीशन रिसीव करना था। तो वी आर गोइंग टू ऐड $800 इन आर कमीशन रिसीवेबल। आगे क्या बोल रहे हैं? द बैलेंस शोन फॉर सैलरीज कवर 11 months to 31st July 2022। Salaries for August 2022 are due and unpaid. There have been no salary increase over the past previous 12 months and an equal amount is paid each month। वो कह रहा है कोई सैलरी नहीं बढ़ी, इक्वल अमाउंट आप पे कर रहे हो हर महीने, लेकिन आपने सिर्फ 11 महीनों की सैलरी पे करी और 1 महीने की सैलरी ड्यू है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि सैलरीज कितनी की है। 53,900। अब ये जो 53,900 है, दीज आर दिस इज द बेसिक सैलरी फॉर 11 months। तो हम इसका डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे। 53,900 डिवाइडेड बाय 11, तो वी विल गेट सैलरी पर मंथ।
पर मंथ सैलरी कितनी है 4,900। अब ये जो 12वां महीना है उसके अंदर Sir, आपको why divided by 4,900, 11? because these are salaries for 11 months. These are not salaries for 12 months. देखिए ना क्वेश्चन में वो बता रहा है, the balance shown for salaries covers the 11 month to 31st July 2022. So these are salaries which are covers for only 11 months to 31st July 2022. Salaries for last month is due and unpaid. जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, तो अगस्त की सैलरी उन्होंने नहीं पे करी, वो ड्यू है, वो उन्होंने पे करनी है। और कोई सैलरी बड़ी Oh, भी नहीं है कि 12 महीनों में। तो इसीलिए वी हैव डिवाइडेड इट बाय 11 in order to get the value per month, salaries per month. Once we obtain the value of the salary per month, we can add it in the total value of salaries in order okay. to obtain the final value. So we'll do 53,900 plus 4,900 in order to get the final value of salaries. At 31st August 2022, rates were prepaid. So these are prepaid expenses. Prepaid expenses should be subtracted from the business, from the expenses. Why? Because prepaid expenses means that expenses have been paid in advance. वो गलत है, आपने एडवांस में पे कर दिया। इंश्योरेंस इंक्लूडेड $700 कवरिंग अ प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बीसी। इंश्योरेंस के अंदर $700 की इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, लेकिन वो प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम है जो बीसी ने अपने लिए इस्तेमाल की थी। अब दीज आर पार्ट ऑफ ड्रॉइंग। Sir, point number 4 फिर से डिस्कस कर दो। प्रीपेड एक्सपेंसेस ना, सो वील सब्ट्रैक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम रेट्स। जो भी रेट्स की वैल्यू है, जैसे रेट 6,000 है तो 6,000 में से आप 300 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। Then we have insurance included $700 covering a period of a private insurance premium for BC। $700 का इंश्योरेंस था, लेकिन वो कह रहे हैं ये प्राइवेट इंश्योरेंस था। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है that personal expenses should be treated separately from business expenses। जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उससे आप सेपरेटली ट्रीट करते हो पर्सनल So we एक्सपेंसेस। have to minus it from सब्ट्रैक्टेड, the yes, we have insurance. to subtract it from insurance। Repairs included 4,000 that's related to new attachment। आपने मशीनरी के ऊपर नई अटैचमेंट लगाई है जिससे मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। This is going to increase the value of machinery. This should not be part of repairs. Repairs are expenses, ये expense नहीं है, ये मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। जो भी आपकी मशीनरी की वैल्यू है उसके अंदर आप 4,000 ऐड कर दोगे, फिर उसके ऊपर डेप्रीसिएशन अप्लाई करोगे। और डेप्रीसिएशन का बेटा क्या आप कह रहे हैं 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इससे डिमिनिशिंग बैलेंस repairs का मेथड, क्या करना है? माइनस करना है 4,000 from the यस repairs बेटा, cost. 4,000 रिपेयर्स में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे और मशीनरी की जो कॉस्ट है उसमें 4,000 ऐड कर दोगे। वी विल सब्ट्रैक्ट 4,000 फ्रॉम रिपेयर्स एंड वी विल ऐड 4,000 इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। फिर वो आगे क्या कह Okay. रहा है, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम बाय रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सिंपल है, इसमें आप नेटवर्क वैल्यू निकालते हो, फिर नेटवर्क वैल्यू पे आप 20% अप्लाई करते हो। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू Okay. इज कि जो भी कॉस्ट होगी आपकी मशीनरी की, लेट्स सी ओवर हियर इट्स 52,000। 52,000 में वी विल ऐड 4,000। 52,000 plus 4,000 we will get 56,000, and on 56,000 we will multiply it by 20%। sorry, 56,000 में से we will subtract firstly our provision for depreciation, क्योंकि जो पिछले साल की depreciation है वो आप सबसे पहले तो subtract करोगे। तो 28,400 हम subtract करेंगे, we'll get 27,600। फिर जो 27,600 होगा उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे 20%। ठीक है, तो आपको डिप्रीसिएशन की फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरह से आपके पास डिप्रीसिएशन आ जाएगा। तो एक ठीक है, मिनट, अब आपके पास 23,600 मिल गया और फिर उसके ठीक है बाद ट्वेंटी सेवन 4,000 थाउजेंड का सिक्स क्या हंड्रेड में करना है? से 27,600 पे आप 20% अप्लाई करोगे तो आपको डिप्रीसिएशन पता चल जाएगी। 23,600 और ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स 52,000, हंड्रेड पे 27,600। 27. यस। But if we minus 20,400, तो won't it be 23,600? नहीं ना बेटा, Provision for depreciation वी विल कितना है? वी विल ऐड 4,000 ना। जो भी मशीनरी की कॉस्ट है, जैसे मशीनरी की कॉस्ट 52,000 है, तो वो कह रहे हैं कि उसने 4,000 की अटैचमेंट भी तो खरीदी है मशीनरी के साथ। तो जो मशीनरी की कॉस्ट को बढ़ाएगी ना, तो 52,000 में 4,000 आप ऐड भी तो करोगे, रिपेयर से अच्छा, 4,000 तो फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। 56,000 यस, 56,000 हो जाएगा। फिर फिर 56,000 में से से आप 20. सब्ट्रैक्ट कर दोगे 28,400, सो विल गेट 27,600। तो 27,600 के ऊपर वी विल अप्लाई 20% इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। So 27,600 multiplied by 20% is
5,520. Yes. Yes.